देनी ना मु देखिन ताकू जे ना, दीदी जो बिल्कुल देखो। नर्मदा दीदी जो देखिते कहले समय देखिबनी मु कहले मु कहीं देखिबी देई साला पर मु देखिबी ना कहले से कहउतले जे भलो अछि मॉडल आंसर टा कहले देखिबी बहुत भलो अछि मु कहले मु देखिन टोटल कि भी देखिबिनी मु पर साल मु एग्जाम देई साला पर देखिबी एग्जैक्टली ठीक अछि सो हमें मॉडल आंसर टेस्ट 1 रो पार्ट 1 आज देखिबा पार्ट 1 पार्ट 2 हमें नेक्स्ट क्लास रे नेक्स्ट सेशन देखियो काली भी सेम टाइम रे हमें कर दबा सो मॉडर्न हिस्ट्री और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस जोटा कि थिला हमर 29 तारिख टेस्ट थिला 3 घंटा तो जानिछे समस्त 250 मार्क्स सो हमें फर्स्ट क्वेश्चन थिला एक्सप्लेन द फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ स्वदेशी एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल सो स्वदेशी मूवमेंट कथा तुमरो आसी सो क्वेश्चन एठी हला कीवर्ड तुमे सबले फॉलो करिवो कि कीवर्ड कोन मोस्ट इंपोर्टेंट कीवर्ड कोन इथरे सो स्वदेशी है ना स्वदेशी मूवमेंट ये हला मोस्ट इंपोर्टेंट कीवर्ड इथरे देन अगेन कोन कहछि ना फिलोसॉफिकल बेसिस ओके बट तुमको कीवर्ड को आगे सबले इंट्रोडक्शन में ट्राई करिवो कीवर्ड को रखिवो The Swadeshi movement was part of the Indian independence movement and contributed to development of Indian nationalism. The movement began in 1906 by Indian nationals and opposed to partition of Bengal. Was one of the most successful movement against the British rule. So this is what introduction should be. Introduction सबले based on your keyword. सबुबले ट्राई करिवो आइडेंटिफाई करिवो सब्जेक्ट या जोटा की कीवर्ड मु कहूची सबुबले सेटा को आइडेंटिफाई करिवो ट्राई करिवो कि सब्जेक्ट मस्ट बी योर इंट्रोडक्शन मस्ट बी जोटा की अराउंड योर सब्जेक्ट इज स्वदेशी या स्वदेशी मूवमेंट देन बॉडी पार्ट देखो एग्जाम रे तुमे लिखिबो नाही इंट्रोडक्शन बॉडी ये सब बिल्कुल लिखिया दरकार नाही एग्जाम रे ये सब मेंशन करिया दरकार नाही मु आमे एठु दोउछु इथि पई कि सदा तुमे गोटे हैबिचुएटेड हो जिवो बाय द टाइम मु देखिथिबो एग्जाम रे तुमर देइछि टेस्ट 1 रे टाइमिंग भी दे देइछि है ना एग्जाम रो क्वेश्चन रो टाइमिंग भी दे देइछि सो दैट तुम गोटे माइंड रो फोकस रहइबो कि एई टाइम रे एति हमें फिर माने खत्म करिया दरकार देन क्वेश्चन आसले कि कोन थिला ना फिलोसॉफिकल बेसिस से क्वेश्चन पछारिनी कि स्वदेशी मूवमेंट काहे थिला व्हाट आर द मेजर रीजन बिहाइंड स्वदेशी मूवमेंट ये क्वेश्चन पचारिछि कि फिलोसॉफिकल बेसिस देन व्हाट डू यू मीन बाय फिलोसॉफिकल बेसिस फिलोसॉफिकल बेसिस माने कोन बुझुछ एनी आइडिया बेसिकली फिलोसॉफी माने कोन some study about ideas and beliefs है ना study about ideas and beliefs ओके हमर सेपटे क्लासेस चलची पिला इथमें जॉइन करि पाताती हमें स्टार्ट कर दबा आसन से माने रिकॉर्डिंग लिखि देबे So philosophy basically ideals kon. So the ideological inspiration came from the new regional basis माने बुझ पड़छ तो कोन पई स्वदेशी मूवमेंट हैला कोन ता पछरे आइडियलिज्म कोन थिला या आइडियोलॉजी कोन थिला So the ideological inspiration came from the new regional literature which provided a discursive field in defining the Indian nation in terms of its distinct cultural heritage and civilization. बेसिकली मेन यार बैकग्राउंड कोन थिला गुडे हला कॉलोनियलिज्म ता सहित कनेक्शन कोन ना हमरो इंडिया रे धीरे धीरे एमर्ज होतला इंडियन नेशनल मूवमेंट जोटा कि 1885 रो हमरो ऑफिशियली इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होची बोले हमें मानू काहे कि ना एई ईयर रे फॉर्मेशन हेतला इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना आईएनसी फॉर्मेशन हेतला So INC formation hela pore is nationalism that is nationalism mane what do you mean by this
Any idea? What do you mean by nation, country, and state? Tell me, these concepts are same or different? Any idea, guys? Nation, country, and state. India is a nation. India is a country. If I say India is a nation, India is a country, India is a state, meaning would be same or different? Same. Same रहेगा sir. Same. Sure. Same. Different रहेगा. India is the nation, India country, state. तीनटा जाक समान अछि, ठीक अछि. Not at all. Sir, state is more a political, country is a geographical, and nation is a cultural. In this degree, it will vary. So nation, basically, we will discuss nation later. Country, basically, when we say it is a country, when its boundary is well defined. Boundary is well defined. That means geographically, India is a country. That means it is a geographical concept. That means land related concept. If our land is clearly defined, then we can say India is a country. Then what do you mean by state? Can we say India is a state or not? Yes. Yes. So this is a political concept. ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ president is a head of the state, ସେଇଥିପାଇଁ international ଜାଗାରେ represented କରାଯାଏ president ର ନାଁ. ସବୁ साइन କରାଯାଏ diplomatic signs वगैरह या country ଭିତରେ ସବୁ agreements हुए in the name of president. This is political concept. That means politically India is a state. Politically India is a state. Here no boundary required. Here no land required. That means this is like software. This is like hardware. हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर होई परिबन. बुझिबला ना. सॉफ्टवेयर एक्चुअली कंप्यूटर रे मेन फंक्शन करे. जेमिति पॉलिटिकल एंटिटी मेन फंक्शन करंती स्टेट रे, ऐसे कंट्री रे, राइट. कंट्री इज अ हार्डवेयर, बट हार्डवेयर खाली हार्डवेयर हेले कंट्री स्मूथली चली परिबन. सेति पई स्टेट हैला पॉलिटिकल कांसेप्ट. Then what do you mean a nation? Nation is a cultural concept. Cultural means India, we are culturally united. We are culturally united. आमे जिते भाबु जातीयता नेशनलिटी सेते बेले आमे देखुनु आमे को जागारु आसु कोठु आसु. We are all Indians. जेते आमे इंडियंस कथा कहूचु, इंडियन नेशनलिज्म कथा कहूचु, सेतेले आमे समस्ते इमोशनली कनेक्टेड, कल्चरली कनेक्टेड, irrespective of our diversity. We feel we all are connected. We feel we all are united in a country of land which well defined. Getting or not? बुझेला नहीं. Okay sir. तो सेति पई नेशन कंट्री जेतेबेले नेशनलिज्म कथा कोआ जीवो सेतेबेले सबोले ट्राई करिवो कि एई जिंस को कांसेप्ट को रखिया पई. स्टेट जेते कोआ जीवो स्टेट माने कोन सेटा आ कंट्री माने कोन.
सो आमे डिस्कशन करथले कि एठी कोन कहैतला कि बेसिस कोन स्वदेशी मूवमेंट होबार तार बेसिस कोन थिला फिलोसॉफिकल बेसिस सो स्वदेशी काहे कि आसिले कांसेप्ट इंडियनाइजेशन करबा पई एग्जैक्टली काहे कि आसिला से माने चाहले प्रोडक्शन को आगरु कोन होउतला धीरे धीरे कोन होउतला आइडिया थिला कोन ब्रिटिश ब्रिटिश सब प्रोड्यूस करथले इंडिया रे ब्रिटिश रो फॉरेन क्लोथेस फॉरेन इवन सॉल्ट वगैरह सब किछि फॉरेन ओरिजिन होउतला आ से माने बिलीव करथले मास प्रोडक्शन टा मास ओरिएंटेड हो एवं इंडिया रे आसी से बिजनेस करे बट एमाने कोन चाहिले प्रोडक्शन शुड बी बाय द मासेस माने लोके मास प्रोडक्शन करंतु नॉट मास प्रोडक्शन हो बाय मशीन ब्रिटिश कोन आनिथिला मशीन आनिथिला ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन परे प्रोडक्शन को प्रमोट करथिला और इंडिया रे भी धीरे धीरे सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी कोन करला प्रमोट करला मशीन सब नहीं आसिला ब्रिटिश आसी एडी प्रोडक्शन कला तो जो स्वदेशी जो कांसेप्ट आसिला ए कांसेप्ट रो आसिला कि प्रोडक्शन बाय द मासेस आमे ऑलरेडी कॉलोनाइज सोसाइटी रो अछु ये कॉलोनाइज को सोसाइटी आम भितर फीलिंग आसी आछि आमे समस्त बर्तन निज देश कथा चिंता करिवा नॉट अबाउट ब्रिटिश so it would imbibe in the people self-governing perspective maximum economic and political power including power to decide what to be imported into or imported from the village would remain in the hands of the village assemblies. So contribution of philosophical basis of Swadeshi to Indian struggle. Kona, the concept of Swadeshi later become the basis of all anti-British movement. यार contribution कौन आगे तो स्वदेशी and its contribution यार very important contribution तुम्हें जानी चो स्वदेशी जो initial phases रे थिला स्वदेशी जो initial phases रे थिला से स्वदेशी movement ही basically जोगु ही बहुत किछि आगो को इंडिया रो फ्यूचर ये करिछि तुम्हें जानी चो पार्टीशन परे 1906 रे कोन हला मुस्लिम लीग फॉर्मेशन हला स्वदेशी मूवमेंट हला लोकन के भितरे से फीलिंग एंटी ब्रिटिश एटीट्यूड जो क्रिएट हला सेटा धीरे धीरे गांधीयन फिलोसॉफी रे भी मध्ये इनकलकेट हला so the concept of swadeshi later became the basis of all anti british movement and became the fundamental in the gandhian philosophy getting or not yes sir तो क्वेश्चन केमिति लिखि देखो क्वेश्चन को ट्राई करियो आगे क्वेश्चन पढ़ो take 30 seconds or 1 minute if you can 1 minute भी नियो but आउ जो रिमेनिंग 6 सेकंड रहउची तुम 7 मिनिट पाखा पकी मिलिबो गोटे 10 मार्किया क्वेश्चन कि 15 मार्किया क्वेश्चन पाई 12 मिनिट पाखा पकी रहइबो गोटे मिनिट नियो आगे क्वेश्चन को सेग्रीगेट करिया को ट्राई करो माइंड रे कि कोन इनिशियली पचारि छी कि दर दीटा पार्ट अछि कि तीनटा पार्ट क्वेश्चन अछि सेटा को डिफरेंट करिया को अलग अलग करिया को ट्राई करो देन तुमे स्टार्ट प्रिपरेशन करो इंट्रोडक्शन रु कीवर्ड को धरि सेही भलिया गोटे माइंड रखो काना देखो क्वेश्चन पिला कोन करिछन मु किछि क्वेश्चन देखुतिली ताकर कॉपी देखुतिली पिला स्वदेशी मूवमेंट तो स्वदेशी मूवमेंट विषय लिखि जाय स्वदेशी मूवमेंट या हैतिला स्वदेशी मूवमेंट या हैतिला स्वदेशी मूवमेंट पार्ट बेंगल पार्टीशन या हैतिला ई दिन हैतिला पूरा बेंगल पार्टीशन ऊपर लिखाई स्वदेशी मूवमेंट विषय लिखाई पार्टीशन ऑफ बेंगल ऊपर बेसी लिखि दिजा सेठी पचारणी स्वदेशी मूवमेंट काहे की हैतिला सेठी पचारणी स्वदेशी मूवमेंट रो कोन कोन तार फीचर कोन से पचारची इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को ये कंट्रीब्यूट करला और ये काहे की हैतिला काहे की हैतिला भी सेटा पचारणी बेसिस कोन फिलोसॉफिकल बेसिस केवल को आइडियोलॉजी जुगु ही ये स्वदेशी आसिला कॉन्सेप्ट या सेती कथा पचारची आ किछि पचार तुम चिंता कर तुम यदि खाली मु बहुत गुडे पिला देखिली सी स्वदेशी कम लिखिछि पार्टीशन ऑफ बेंगल विषय पूरा एक्सप्लेन कर दैछि पार्टीशन काहे की हला मुस्लिम हिंदू मुस्लिम बेसिस रो ओरिजिनल रीजन कोन ऑफिशियल रीजन कोन जे हैतिला रियल रीजन कोन थिला ये सब लिखिछि सी क्वेश्चन रो मोटो कुछ बुझना
बुझल नहीं एमिति बिल्कुल लेखन ट्राई करो क्वेश्चन को सब ट्राई करियो सेरा को अंडरस्टैंड करिवो और अंडरस्टैंड करिकी ताको लिखिया भाई सर लिखिला बेले से बुलेट मार्क की आर मार्क लिखा हो ना सेमती की सरकार ने प्लेन लिखा हो लिखिबो हां प्लेन प्लेन लिखो या बुलेट पॉइंट देई परछु जदी एमती एमती बुलेट पॉइंट जे देई परछु किछ असुविधा नहीं पॉइंट फॉर्म रे हेई जे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन एटा लिखा हो नहीं ना ना माने ए जो ना सेटा ना लिखे दरकार ना नहीं इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन किछ लिखे दरकार नहीं पैराग्राफ खाली चेंज कर दो इंट्रोडक्शन सर पर मो कथा टिके सुनिबे हां कोन सर आपण मझे कुआड पळै जाउछन आपण टिके हमकु बियर करन माने जेमती होउतला प्रीलिम बेले टिके मोटिवेट करन तो एमती ए सब कथा कहले टिके भल लागिवो सर 10 मिनिट हो पछे आपण ऑनलाइन रे आसी कोन कहंतु टिके न थाउ पछे क्लास आज्ञा एक्चुअली मेडिकल इशू रे थिली सेति में मु टिके नले गुटे सप्ताह ठीक से नहीं पारुनी क्लास क्लास किछि बहुत ही ये रे अछि ए परसुड मेडिकल रे दौड़ू छी तो नहले तो मु क्लास एनी हाउ नियन हाउ ठीक अछि मोटिवेशन दिया जो सब बुझला नहीं क्वेश्चन मु कोन केमति कहली हाउ डू यू गो अबाउट ए क्वेश्चन बट जे भी लेखी छ मु ताको खराब कहनी एथि पई कि एटलीस्ट दे आर ट्राइंग इनिशियली धीरे धीरे ट्राई करो भूल हो डजंट मैटर बट ट्राई करले भूल करले ही तुम जानिबो so the philosophy of Swadeshi movement was instantly identified as the highest form of patriotism and Swadeshism became the cradle of the new India. It was an intensely spiritual movement and aimed at emancipation of India in every sense and of every India. So Swadeshi movement रे कोन हेतिला boycott and British goods कौन कौन ब्रिटिश बोर्ड स्कूल कोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन केम टू स्ट्रिंग अपील्स ऑफ फॉर एम्ब्रेसिंग स्वदेशी इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ एटा स्वदेशी मूवमेंट विषय रे कहौ कोन स्वदेशी मूवमेंट ऊपर कोन हेइतला एक्चुअली स्वदेशी मूवमेंट रो फिलोसफी कोन थिला ता विषय रे कहौ कोन हेइतला स्वदेशी रे एक्चुअली बॉयकॉट करा हेइतला ब्रिटिश गुड्स स्कूल कोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन ये सब बॉयकॉट करा हेइतला इंडिजिनस मैन्युफैक्चर कराइतला नेशनल एजुकेशन को प्रमोट कराइतला इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट कराइतला इंडियन लिटरेचर को प्रमोट कराइतला above all स्वराज and political freedom became the life breath of the nation was due to the philosophical touch of Swadeshi बुझला नहीं this is gist this point the gist of तुम्हारा क्वेश्चन बॉडी पार्ट रो मेन gist लाइट स्वदेशी मूवमेंट कोन तुमे एक्सप्लेन कर दो क्लियर हो ना नहीं समस्त भाई पचना नहीं देखो जरूरी नुहे तुमे एमु जो टिके स्ट्रांग वर्ड जो गोटे जगह लिखा है सेही भले लिखिबो जरूरी नुहे डोंट राइट लाइक दिस बट तुम भाषा रे लिखो बट कांसेप्ट जेमति सर ब्रिटिश गुड्स हला स्कूल कोर्स एटा तो निज भाषा आ कोन लिखिबो एटा समस्त जानि एटा इजी वर्ड्स पूरा बट बुझी जाउ जिन सेटा एक्सप्लेन करो सिंपल वर्ड रे एक्सप्लेन करो बेटर बुझियला So it was a movement for total emancipation of every Indian in all walks of life, political, economic, social, cultural, and above all spiritual. The Swadeshi and boycott movement placed great emphasis on Atma Shakti or self-reliance as a means of reasserting national dignity in different fields. For example, in painting, music, and literature, which enhance the freedom struggle. जानी चाहिए तुम्हें literature केमती हितला आउ music रे भी हमार सोनार बांग्ला के लिखिथिले रविंद्रनाथ टैगोर protest of Bengal's partition became the rallying point in the Swadeshi and boycott movement very important thila and the ideas of non-cooperation and passive resistance successfully applied many years after Mahatma Gandhi eta apply करथिले जो boycott non-cooperation ये सब महात्मा गांधी पर आइडेंटिटी कले and founded their origin in the early 20th century of Swadeshi and boycott बुझियला सर जो पेंटिंग सर कौन सी टाइम रहितला की कोन करथिले की पेंटिंग किए कोन करथिले ने एटा मास पेंटिंग हेतिला कि जेमिति गोटे मूवमेंट हेले गोटे नॉर्मली गोटे मूवमेंट हेले तुमे एबे भी आना मूवमेंट रे
जी जार किए टोपी बनैला किए कांथर लेखिकी रखिला कि देखो चलो दिल्ली चलो कि भलिया माने पेंटिंग्स माने पर्टिकुलर पेंटर ना नहीं सेमिति मास पेंटिंग माने देखनी कि तुम्हें लेट से इलेक्शन हैला भी कांथरे भांथरे पेंटिंग करनी याको वोट दियो जेमिति भुवनेश्वर लेखा हिची आउ थरे ऑपरा जेता तो सही भलिया पेंटिंग माने This is मूवमेंट new protest jota. हाँ हाँ प्रोटेस्ट रो माध्यम बेसिकली ये जार पेंटिंग क्वालिटी भी अमर छला धीरे धीरे to conclude karibo so the Swadeshi movement was though the Swadeshi movement was not successful in reaching its immediate goal, but it proved a platform for the national movement, national freedom struggle, and later it showed the way to the nationalist leader to prepare the masses for the next phase of struggle under the Gandhiji's leadership. Getting or not? क्वेश्चन टा तुमको देखिलो केमिति लागिला बहुत बढ़िया रूप रे आर्टिकुलेट हैला ना नहीं तुमको इनिशियली Yes, sir. क्वेश्चन जे देखिबो माइंड रे तुम लागियो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तुमको मु जो एठी भी बैकग्राउंड देली कि किछि किछि ये अछि एडा को छाडी देले चलिबो बट तुमे इनिशियली लेखियो कि फिलोसॉफिकल बेसिस कोन देन स्वदेशी रो फिलोसॉफी कोन देन यार इंपैक्ट कंट्रीब्यूशन कोन दैट्स इट ये सब जानिचो मु जानिछि तुम माने समस्त जानिछो कि बॉयकॉट स्वदेशी रे कोन हेइतला बॉयकॉट गुड्स कराइतला स्कूल कोड एडमिनिस्ट्रेशन देन एज वेल एज तुमरो इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग हेइतला नेशनल एजुकेशन को प्रमोट कराइतले लिटरेचर आर्ट तुमरो लैंग्वेज ये सब को प्रमोट हेइतला एंड एज वेल एज तुमरो एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ रे जोडे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोशल कल्चरल ये सब रे बेसिकली लोक पार्टिसिपेट करथिले कथा हला कि तुमे सेटा को एइथरे इंप्लीमेंट करिवो केमिति सेटा तुम ऊपर डिपेंड कर और सेटा केमिति होबो नॉट तुम ऊपर सेटा धीरे धीरे प्रैक्टिस रे हो देखो जे 10 मार्क क्वेश्चन थिबो तुमे हार्डली बॉडी पार्ट रे 4-5 पॉइंट लिखि परिबो मुश्किल रे दरकार माने बेसी न इवन 15 मार्क रो क्वेश्चन हला आ 5-7 पॉइंट इंट्रोडक्शन रो गोटे पैराग्राफ हला कंक्लूजन गोटे पैराग्राफ हला एंड बॉडी पार्ट रो 5-7 पॉइंट 8 पॉइंट लिखलो बट दैट्स इट 15 मार्क्स नहीं एनफ एते गोटा पॉइंट दरकार नहीं बट स्टिल देन तुमे अधिक टिके जानिले तुमे एग्जाम रे सबुडा रेप्लिकेट करि परिबो नाही सो स्वदेशी रिलेटेड क्लियर हेलो जदि ए क्वेश्चन चेंज हो जाई था क्वेश्चन पछे था व्हाट इज द बेसिस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट या व्हाट इज द कॉजेस बिहाइंड स्वदेशी मूवमेंट एंड राइट डाउन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बुझिला नहीं सेठी क्वेश्चन एथिले एठी पार्टीशन ऑफ बेंगल ऊपर लिखला पार्टीशन ऑफ बेंगल हैला देन ओनली स्वदेशी हैला देन तार रिपरकशन तुमे सूरत स्प्लिट वगैरह इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ऊपर भी इंपैक्ट कला मास पार्टिसिपेशन बढ़ेला मासेस फॉर द फर्स्ट टाइम स्वदेशी रे पार्टिसिपेट करथिले तो ये सब दिन चले बुझिला नहीं क्लियरली गेटिंग और नॉट Yes, sir. then assess the contribution of Lal Bahadur Shastri to reviving the morale of India as a nation. लाल बहादुर शास्त्री ये कोई परियो लाल बहादुर शास्त्री केबे टू केबे प्राइम मिनिस्टर थिले 60s रे. So 65 to this is 72 only. 65 जवाहरलाल नेहरू केबे डेथ हिथिला Sir, 64, 1964. वेरी गुड 64 रो 66. एग्जैक्ट सो लाल बहादुर शास्त्री तुम्हारा सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया was a great statesman known for his honesty humility he served the country in various roles and was one of the most down to earth personality
of our history जानिछ बहुत बढ़िया लोक थिले यांको ऊपर स्टोरी सुनिथिबो चिनी नथिला चा पई बनिया पई सो ये बेसिकली स्मॉल इंट्रोडक्शन आउ किछि भी चाहिले तांको समर कोन काम होई चाहिले भी इथरे के इंट्रोडक्शन दे करियो ड्यूरिंग शास्त्री's brief time in prime ministership the country faced major challenges कोन challenges हेतिला ये जतले आसिले ता पूर्वरु 1962 रे इंडो चाइना वार हेतिला एंड ये जस्ट प्राइम मिनिस्टर हेले तापरे 1965 रे इंडो पाकिस्तान वार हला इंडो पाकिस्तान वार during the Shastri brief prime ministership the country faced two major challenges गोटे हला 1962 हां आ गोटे कोन हेतिला failed monsoon drought and serious food crisis presented the grave challenges and इंडो पाकिस्तान इटा हला तांको समय रो सबटू बड़ क्राइसिस थिला जो इंडो चाइना वार हमर बहुत काम खराब हो जाइतिला अवस्था खराब हो सो शास्त्री फेमस स्लोगान जय जवान जय किसान ये सब देखो लाल बहादुर शास्त्री आसीओ माने ये पॉइंट को केबे भी स्किप करि परिबो जय जवान जय किसान को तुम्हें पूरा को पड़िबो ते इंक्लूड करिया को पड़िबो सो शास्त्री फेमस स्लोगान जय जवान जय किसान symbolize the country's resolve to face both these challenges it revived indian masses moral so shastri ji as india knows him was a humble yet strong statesman who guided india through tough time also shastri promoted white revolution and green revolution ये भी मोदी यहाँ समय प्रमोट करते against the society prejudice and discrimination shastri was born lal bahadur srivastava being against the prevailing caste system he decided to drop his surname srivastava को से surname को drop कर देते the title shastri refer to scholar or a person adept in holy scripture so during the adverse situation too he came forward and made himself accountable and showed the sign of true leader one who leads from the front तुम जानिछ ना कोन करथिले कोन एठी प्रूफ करथिले एक निजो को भी ये कर देथिले कोन जे खाइयो को मिलु नथला से कोन करथिले से भी गुटे ओली खाइयो छाड़ देथिले आ अकाउंटेबिलिटी कथा कहथले अकाउंटेबिलिटी कोन से रेलवे मिनिस्टर थिले ओडे एक्सीडेंट हला तमिलनाडु रे से छाड़ी देले okay he served as railway minister jawaharlal nehru cabinet and was जोंडे कि 1956 रे ये रिजाइन कर देथिले ट्रेन एक्सीडेंट रो जोंडे कि अरियालूर इन तमिलनाडु रहितला से रिजाइन कर देथिले तो यांकर जो जेस्टरटा समस्ते हमर एबे अछंती रेलवे मिनिस्टर बसनी बैष्णव बालेश्वर ट्रेजेडी गला एबे आंध्र प्रदेश रे कोंडी गडे हला विजयनगर ना कोंडी सेठी हला Yes. ता पूर्वरो बक्सर रे हला आए दिन डेली सकाळ सुनला रोड एक्सीडेंट होउची से अछंती सो एई समय तांको बहुत बड़ नाम हितला सो अकाउंटेबिलिटी तांको भितरे भराई सो अकाउंटेबिलिटी हम लिखिथिले सेइथमे then practice before preaching 1965 India was embroiled in a war with Pakistan and the country was facing acute food shortage he asked his family to give up a meal a day it is only after he was sure that his own family could survive this he announced on all India radio urging the public to sacrifice one meal at least once a week गोटे दिन छाड़िया पई गोटे दिन गोटे मील छाड़ सेटा आगे निज फैमिली रू से स्टार्ट करथिले moral public and private life shastri ji had a Chevrolet Impala car for official use which his son once used for a drive tango poor drive when shastri learned about it he asked his driver to check the distance the car was used for and later deposited the money in the government account could you believe this एभले मनुष्य दुनिया रे अछि
ତାଙ୍କର କାର ତା ପୁଅ ଚଢେଇକି ନେଇ ପଳେଇଥିଲା ତ ସେଇ ତାର ପଇସା ଦେଇଦେଲେ। So believed in Silam Param Bhushanam, that is his maiden Independence Day speech. He had laid the emphasis on the character and moral strength, not only for personal growth but for the development of the nation. So Shastri overall tenure helped India to become self-sufficient and later to become exporter of the food grain, mainly his ideas. Body of work boosted Indian moral in 1960s. Also, his tenure led to the foundation on which industrial growth would be achieved. ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଇଣ୍ଡୋ ପାକିସ୍ତାନ ୱାର ହେଇଥିଲା, ସେଇଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିନ୍ କରିଥିଲା ନା ନାହିଁ? ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ତାସ୍କେଣ୍ଟ ଚୁକ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ତାସ୍କେଣ୍ଟଟା କୋଉଠି? Uzbekistan. ଉଜବେକିସ୍ତାନରେ। ସୋ Okay. ये बेसिकली तांको समयର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ବୁଝିବ। ଟିକେ ଅଧିକା ଲେଖା ହେଇଛି ବଟ୍ ତୁମେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। So ଆମେ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱଦେଶୀ and then ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ। Then third Sir, question, ହଁ sir, conclusion ଟା କେତେ word ରେ ରହିଲେ ଠିକ ହବ? ଦେଖ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଦିଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲେଖିବ, ମାନେ ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଯେମିତି ହେଇଯାଉଥିବ ଏଟଲିଷ୍ଟ 4-5 ଲାଇନ ହେଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 4-5 ଲାଇନ ଭିତରେ ରଖିବ, ଅଧିକା ରଖିବନି। କେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ କଣ କରିବ, ସମୟ ଯଦି ମିଳିବନି ଖାଲି ପଏଣ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଲେଖିକି ପଳେଇବ। ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ କି କନକ୍ଲୁଜନ ପୁରା ଲେଖିବା, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଥିବ ଟ୍ରାଏ କରିବେ କି କିଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ଲେଖିଛ ତାକୁ କନକ୍ଲୁଡ କଲେ ବେଟର ହବ। କି ଏକ୍ସାମିନର ବେଶୀ ଦେଖନ୍ତିନି ବଡି ପାର୍ଟ, ସେମାନେ ବେସିକାଲି ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତି। ତ ସେଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କି କନକ୍ଲୁଜନ ଟା ମେନସନ କର, ତୁମର ମାର୍କ କିଛି ନା କିଛି ଏନହାନ୍ସ ହବ। ଗୋଟେ ମାର୍କ ଆଜ୍ଞା ହଉ ୟା 1.5 ମାର୍କ ହଉ କିମ୍ବା ହାଫ୍ ମାର୍କ ହେଲେ ବି ବହୁତ ବଡ କଥା। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ହାଫ୍ ମାର୍କ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଇଲ, ତୁମର 10 ମାର୍କ ହେଲାନି ଗୋଟିଏ ପେପରରେ, ଜିଏସ୍ ପେପରରେ। 4ଟା ଜିଏସ୍ ପେପରରେ 40 ମାର୍କ। ଏସଏରେ ସେମିତି ଯୋଡ଼ି ଦିଅ ଆଉ ଅପସନାଲରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ, ତୁମର 50-60 ମାର୍କର ଫରକ, ମାନେ ତୁମେ ଲିଷ୍ଟର ଥିବ ୟା ଲିଷ୍ଟ ବାହାର ଥିବ, ଏଇଟା ଡିଫରେନ୍ସ। ଆଜ୍ଞା ତ ସାର୍ ଟ୍ରାଏ କରିବ କି ଦିଟା ଲାଇନ ଦିଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ 2-3ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବେ, ତାରି ଭିତରେ ରଖିବ ଆଉ 4-5 ଲାଇନ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରଖିବ। ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖିଲେ ସବୁ ଟାଇମ ବର୍ବାଦ କରିବ ନାହିଁ। So in 1857, uprising was culmination of the recurrent big and small local rebellions that had occurred in the preceding hundreds years of British rule. So question ଏଠି ଦେଖ, 1857 uprising ମାନେ revolt କଥା କୁହାଯାଉଛି, but ସିଏ କହିଛି ଯୋଉ ହେଲା ତାର ରିଜନ କଣ ଥିଲା? Culmination of big and small local rebels that had occurred in preceding 100 years. ତାହେଲେ ତା ମାନେ କଣ? Early revolts କଥା କହୁଛି। ଦେଖ ମୁଁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଟ୍ରାଇବାଲ ଅପରାଇଜିଂ ହଉ, ପିଜାଡ ଅପରାଇଜିଂ ହଉ, ଇଏ ସବୁ ଅଛି। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ କଣ କଣ ହେଇଥିଲା, କୋଉଠି କଣ ହେଇଥିଲା ଡିଟେଲସ ଲେଖିପାରିବ, ବଟ୍ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇଁ ଏତିକି ବହୁତ। So 1857 rebellion was the biggest uprising against the British rule in India in 19th century. However, it was not spontaneous rebellion, but the spontaneous ମାନେ ଏଇଟା କେବଳ ଏଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ହେଇଛି, ୟା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ହେଇନି ସେମିତି ନୁହଁ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସାରା series of local uprising over the preceding century that had plugged the British. So first ହେଲା ଜଣ ଯାଇକି ଦେଖିବା peasant uprising ହେଇଛି 1770 to 1820s ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା peasant। So the Fakir Sannyas rebellion and Bengal and Bihar, these are widely recurrent and confrontation with almost 50,000 participants involved at the height of the insurgency. And revolt of Raja Chet Singh Awadre. The primary goal was to restore the existing agrarian relation, and it kept the recurring till 1830. Then Poligar rebellion Andhra Pradesh 1799 to 1805. Poligars and जो feudal lords appointed as a militant chiefs, even Poligars were joined by peasant against the company tactics, and the rebellion reached the big scale before it was oppressed.
Then Paika rebellion Odisha, and rebellion under the leadership of Bakshi Jagabandhu against the company rule. Then Firaji movement East Bengal 1830 to 48, first ever no tax campaign led by Shariatullah Khan and Dadu Mia. It was a local in nature and kept the recurring till 1870 पर्यंत ये चालती East Bengal. Then tribal uprising, Bhil uprising, Khandes re present day Maharashtra and Gujarat 1818 to 31. The Bhil rebelled against the British occupation of Khandes but were crushed in 1819. But the situation remained unsettled till 1831 पर्यंत ये चालता है. याको क्रॉस कर देते बट एमाने लुची छुपी के लड़ू था. Then coal uprising of Chhota Nagpur and Singho region of Bihar and Odisha 31-32. Plunder and arson were the chief mode with negligible killing but had a major impact on the region. Then Santhal just before revolt 1857, the most effective tribal movement which spread rapidly covering area of Bihar, Odisha and Bengal against the British infiltrating policy. That is tribal area. So the century-long economic exploitation, political subjugation, discriminatory policies, religious interference, and suppression of uprising finally culminated in the revolt of 1857, giving a platform to the discontent leader of the earlier rebellion to raise the voice against the company. बुझेला आमे सब एक्सप्लेन करथलु कि कोन पई जो सेंचुरी लॉन्ग रे हेइथिला काहे कि हेइथिला ये रिबेल एवं रिवोल्ट 1857 तारो बेसिकली फाइनली कल्मिनेशन पॉइंट. ओके ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर अछि. सर एटा केवल बिफोर माने हबा पूर्व कोन कजेस थिले सेटा ही लिखा हो ना. सेटा ही लिखा हो. मु देखुतली पिलान सु लेक्चर दे रिवोल्ट 1850 एटा मु भी देखुतली सेइति पई मु ये डिस्कशन सेशन नवाटा बहुत इंपोर्टेंट देखली कि मु क्वेश्चन देखली मु बहुत सारा माने देखली ये मु खाली चेक करली कोन चेक करबी आगे डिस्कशन टा आगे कर दिए तेले से माने समहाउ कि छोटे जानिबे कि हां सर काहे कि एमती मार्क देई चंती. तो कॉपी मु आज काली संधि भीतर मु देई देबी तुमरो सब जो माने लेखिथिलो आ जो माने लेखिनो एबे लेखि कि पठाओ ना देखि देई दिया हबो. बट कथा हला कि ये भलिया लेखिले तुमको कौन केमती मार्क दबो जणे तुम जानिया दरकार कि क्वेश्चन को भल से बुझो. सी कहि जो 1857 हेइथिला ये सडन नथिला, ये रिकरेंट नथिला, ये कोन हां ये कोन ना कल्मिनेशन ऑफ रिकरेंट जोंटा कि बिग एंड स्मॉल लोकल रिबेलियन हेइथिला जोंटा कि लास्ट 100 इयर्स. से लास्ट 100 इयर्स रो रिबेलियन कथा पचारछि नॉट 1857. सिमिलरली एक क्वेश्चन जो थिला स्वदेशी कथा मुझे कहली स्वदेशी कथा स्वदेशी मूवमेंट कथा से पचारू नाही. स्वदेशी रो फिलोसॉफिकल बेसिस एंड इट्स कंट्रीब्यूशन सेही फिलोसॉफी जोटा कि कंट्रीब्यूशन कला इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ता विषय पचारू. तुमर एई जो थॉट्स एटा क्लियर होबा दरकार बिफोर ओपीएससी मेंस. तुमे जेमति एई जिंसटा तुम माइंड भीतर क्लियर हे जे कि आमे कोन लेखिबा. देखो प्रीलिम जहाँ भी हो प्रीलिम जेमिति एग्जाम हो प्रीलिम तुम्हें संभाव जेते भी क्वेश्चन डिफिकल्ट पड़ो संभाव एग्जाम तो देई देबो काना तुम पाखरे ऑप्शंस थिबो. एठी तुम पाखरे किछि ऑप्शंस न थिबो मेंस रे तुम्हें अंधार बाड़ी लड़ लागिवो लेखि दी पड़ी आइछ बट प्रॉपर जोंडा कि क्वेश्चन पचारू जी सेटा लिखि नथिबो एतेउ तुम प्रॉब्लम. देन जवाहरलाल नेहरू was considered an architect of modern India, analyze his policies. संगे आकर बेसिकली जवाहरलाल नेहरू कंट्रीब्यूशन कथा पढ़ा आर्किटेक्चर मॉडर्न इंडिया माने कोन मॉडर्न इंडिया रे कोन सी करिछ. So Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India, independent India, and one of the most prominent leader of India independent movement. So तांकर जो 5 principal pillar of Nehru legacy to India कोन ना nation building, democratic institutions buildings, secularism, democratic socialist economics, and a novel foreign policy, non-aligned movement and policy, still form the cardinal values of India. Maybe ये बेसिकली तांकर मेन कंट्रीब्यूशन देला 5 प्रिंसिपल पिलर. देखो इंट्रोडक्शन रूट में जानी गलो एग्जाम में जानी गला कि यू आर इन ए राइट डायरेक्शन.
You are in right direction. So institutionalization of democracy. Democracy लिखिथिले democracy institutional building. So Nehru was committed to the establishment of a strong Indian nation, but the concept of equal rights of citizen would override all societal divisions. Nehru's ideas envisioned in the objective resolution steered the Constituent Assembly to draw up a working constitution. Objective resolution माने बुझी पारछो तो? लेटेस्ट प्रियम्बल जोटा ऐड करा हला Yes, preamble. देखो जो आम इंट्रोडक्शन देले जो एरिया को आम ताले एग्जाम को कहि कि आम एई एरिया लेखियो तुम जाऊ सेई एरिया विषय रे आम धीरे धीरे एक्सप्लेन करू देन आइडियल ऑफ सेकुलर नेहरू बिलीव्स दैट इंडिया बिलोंग्स टू all who had contributed to its history and civilization and that majority community had a special obligation to protect the rights and promote well-being of the minorities ये सब इंपोर्टेंट देथिले से minorities काहे कि ना सही समय पार्टीशन हितला सो पार्टीशन रे जो दुख समस्त पाखरे मन रे थिला कि आउ भले सेही भले माइनॉरिटी को जदी आमे डिस्क्रेडिट करिवु या ताकू जदी आमे तळ लेवल देखिबो एई भले आउ गोटे पार्टीशन हेई पारे या एई भले वायलेंस हेई पारे so this helped the building the narrative of unity in diversity say a idea ଦେଇଥିଲେ unity in diversity then establishing institutions of excellence Nehru built the scientific base for India's space and engineering dreams today with establishment of what is now Indian space research से नेहरू करथिले ना नहीं ये करथिला इसरो सर नेहरू और Yes, sir. साराभाई विक्रम भाई साराभाई Sarabhai, Vikram. एक्चुअली 1979 रे ही 69 रे इसरो होइथिला बट ता पूर्वरु सेटा इनकोस्पार थिला Yes, sir. Incospar. सेटा रीनेम हे कि इसरो हला तो ता पई किछि भाबिबे जे इसरो रो डेट देथिबो 69 रे ता मन नेहरू परे हिथिबो तो ना सेमति नो सो इंडिया हैज अचीव्ड द स्टेटस ऑफ स्पेस पावर टुडे ना जेमति आजि जहा हेछि सो सेटा नेहरू थिले then IITs the Indian Institute of Technology established in his tenure and Indians have a worldwide reputation of foreign engineer of excellence देखो Google रे CEO देखो Microsoft रो देखो जते सब बड़ बड़ कंपनी देखो सब इंडियन IITs रो सब जाइछन Also, he laid the foundation of a dual-track nuclear program, due to which India achieved the nuclear capable status. India nuclear country केमिति हला यांकर सेही program जो So also the economy policy of investing in heavy industry and protecting the nascent manufacturing sector helped India to substitute import to a certain extent. आमे आगु कोन import करी कि चाहू PL 480 जोंटा कि आमे आनुथुलु कहा पाखरु यूएसए पाखरु ताको घोड़ा को जहाँ खाया दउथले सेही जिंस आमे आनुथुलु सो धीरे धीरे ये सेटा को ट्राई करले धीरे धीरे आमे मैन्युफैक्चरिंग करिबा एग्रीकल्चर को इंपोर्ट करिबा सो सब इकोनॉमी को सब्स्टिट्यूट करिया पई से ट्राई करथले इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट देन वेलफेयर स्टेट्स प्लानिंग कमीशन वगैरह स्टार्ट करथले सो द प्लान इकोनॉमी 5 year plan So the planned economy approach, Nehru envisages that in a land of extreme poverty and inequality, the objective of government policy must be the welfare of the poorest, most deprived and most marginalized people. Hello? Hello? हाँ जी हाँ जी वो थोड़ा तबीयत खराब है वो सो रही है और पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है एक्चुअली अभी अभी हो गया मतलब दोबारा भी अल्ट्रासाउंड किया ना 1 हफ्ता के बाद उसमें भी कुछ नहीं आया तो डॉक्टर एबॉर्ट कराने के लिए बोला है मेडिसिन दिया है मेडिसिन के थ्रू ही कराया है
नहीं क्या हुआ कि जो पहली बार जो साइज था एक हम 8 दिन के बाद किए तो वो साइज घट रहा था, इसका मतलब वो डिस्ट्रॉय हो रहा था, तभी वो किया। वो डॉक्टर भी वही बोला कि हाँ 8 दिन हम वेट करते हैं, देखते हैं क्या पोजीशन होता है। लेकिन जब नहीं नहीं नॉर्मल नॉर्मल। ओके ओके ओके। हम देखते हैं अभी, हाँ, अभी इसको पहले क्लियर कराते हैं क्योंकि अभी अभी तो हाँ हाँ, अभी बहुत वीकनेस भी हो गया है। हाँ अभी वीकनेस वगैरह बहुत हो गया है अभी, ब्लीडिंग भी हो रहा है अभी। हाँ, जब वो फ्री होगी करे कर लेगी कल, मतलब थोड़ा फ्री अभी पेन वेन हो रहा है, सो रही है तो। सॉरी गाइस, ओके एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, sir. So similarly ଆମେ discussion କରୁଥିଲେ କଣ ନା the foreign policy ଉପରେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଏବେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯୋଉ ଇଏରେ ଲେଖିଥିଲେ non-aligned movement, so नाम वगैरह, so the for Nehru नाम was the response to the bipolar division of Cold War era. Very important this is, you should mention whenever you get a chance about the foreign policy, about the तुम क्वेश्चन केते केते नाम रो implication भी पचारि पारे, तो सेही जिनस मेंशन करियो, नेहरू को सबले मेंशन करियो। After 2 centuries of British rule, Nehru was determined to protect the country's strategic autonomy without compromising independence by aligning itself to either superpower in the Cold War. समझते कोल्ड वार जानी थी वो, कोल्ड वार रे दीटा सुपर पावर थिले, गोटे ला यूएसए एंड आ गोटे ला यूएसएसआर। यूएसए लेड बाय कैपिटलिस्ट इकोनॉमी and USSR by basically ideological difference thila, USSR la communism. So these two superpower basically fighting करते आ सेमाने समस्त चाहथांती कि ये मो पट को पड़ी आसु, इंडिया मो साइड को आसु, यूएसएसआर चाहथांती मो साइड को आसु। सो नेहरू कहले ना भाई ये चक्र आमे फसिबानी, आमे अलाइन का सहित होबानी, नॉन अलाइन, अलाइन माने कहा सहित आमे मिसिबानी, वी आर इंडिपेंडेंट रहिबा, आमे सेटा को थर्ड वर्ल्ड भी कहै। कैन फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड धरो ये यूएसए फर्स्ट वर्ल्ड, यूएसएसआर सेकंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को नॉन अलाइन मूवमेंट कंट्री को कहा जाउतला। So after 2 centuries, British Nehru was determined to protect the country's strategic autonomy without compromising the independence by aligning itself to either superpower in the Cold War era. So this policy of NAM made India one of the most distinguished leader of third world solidarity. जोटा कि third world बुझी पारदा, जो माने दीटा वर्ल्ड को जॉइन कर नथिले, यूएसए रो वर्ल्ड और यूएसएसआर वर्ल्ड को जॉइन कर नथिले, reach out to rest of colonized world। ये चाहूतले कोन इंडिया ऑलरेडी सारे सफर हेची कॉलोनी रे, आउ इंडिया चाहू नथला का सहित मिसिक रहिया पे, and forge a joint front against the colonialism and reinvented imperialism, सीता against रहिया चाहते। So although his although his 17 year in the prime ministership, he held up democratic socialism, emphasis that India needed to achieve both democracy and socialism. The four pillars of his domestic policy were democracy, sociology, unity, and secularism. He successfully integrated these pillars into building of modern India. ये तुम्हें conclusion करी परिबो, and these are the जोंडे कि some important बहुत सारे जिनस करिसंती, बट हमको आर्किटेक्ट कहया माने कोन, जो बेसिस रे आमे मॉडर्न इंडिया वर्तमान अछि, जो बेसिस रे आमे वर्तमान इंडिया को देखुतु, सेटा कोन सेई सब जिनस करिथिले नेहरू, सेई जिनस को हम केवल मेंशन करबा, बुझिला नहीं। चाहे प्लानिंग कमीशन हो, प्लान इकोनॉमी हो, चाहे आईआईटीज हो, चाहे इसरो हो, चाहे न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, चाहे यूनिटी इन डाइवर्सिटी कथा हो, सेक्युलरिज्म कांसेप्ट, चाहे डेमोक्रेसी हो, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वगैरह जो हमर आसिला, तो ये सब कांसेप्ट को सब ट्राई करिवो मेंशन, देन नाम फॉरेन पॉलिसी एंड वेलफेयर स्टेट। ओके क्लियर सर फास्ट अमेंडमेंट एक्ट जो आसीथिला लैंड
लैंड रिफॉर्म ऊपर सेटा मेंशन हेबो कि ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ତୁମକୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ତ ନେहरू କରିଛନ୍ତି ମାନେ 17 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ସେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ତ ତୁମକୁ ତାକୁ କନସାଇଜ କରିବାର ଅଛି ଲେଖିଲେ ଲେଖିପାରିବ ବଟ୍ କଥା ହେଲା କି କେତେ ଜିନିଷ ତୁମେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିପାରୁଛ ଆଉ ତୁମକୁ ଟାଇମ ବି କମ ରହିଥିବ ନା ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ବି ଲେଖିପାରିବ ଏଇଟା ବି ଭଲ କଥା ଭଲ ଇଏଟା ଆଜ୍ଞା सर ଓକେ ନେକ୍ସଟ write a short notes on peasant movement and their future even analyze the difference between peasant movement and peasant farmer agitation peasant struggle in these struggles the peasant emerge as a main force fighting directly for their own demands. The movements in the period between 1858 and 1914 tended to remain localized, disjointed, and confined to particular grievances, contrary to the movements after 1940. So, peasant struggle basically, peasant माने कौन तुम जमी बर्तमान जोटा कि ये आमर फार्म लॉ एगेंस्ट जो प्रोटेस्ट होता तुम मन थी कौन से केते फर्मर आसिकी वर्षे जाक लगी रही 11 मास पाखापाखि से बसी रही कौटी रास्तार बसीगले तुम्हें जिते बड़े गोटे पिजन चाषीर पेटर हाथ मारिदब पाखे ऑप्शंस किसी ना आज मानि नियो आमे जी जॉब करचु जी बिजनेस करचु जी किसी माने सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर काम करुची ता पाखे ऑप्शन अछि कि बुली की जीवा को प्राइमरी सेक्टर पिजेंट चाष छड़ा ता पाखे कुछ ऑप्शन नाही सी किछ करि परिबो गोटे पिजेंट कहबो चाष छाड़ी कि तू जाई कि जॉब कर सी करि परिबो कारण सी सेटा ही जानि ची बेस्ट आ जेते सेटा ता पेटर जेते लात मारिबो सेते से फाइट करबो सेम सिचुएशन सही समय में हेता ब्रिटिश बेसिकली धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन या मेकानाइज प्रोडक्शन करला आउ बड़ बड़ ये आसिले मनी लेंडर लैंडलॉर्ड ये सब धीरे धीरे ब्रिटिश रु आसिले से माने धीरे धीरे कैश क्रॉप्स रे चाष करिया स्टार्ट करले चाहे इंडिगो हो इंडिगो रिवोल्ट सुनिथिबो तुमे किबा तुमरो इंडिगो हो किबा सुगर केन वगैरह ये सब रे चाष करिया स्टार्ट करले सो कॉजेस ऑफ मूवमेंट्स काहे की हला तो peasant atrocity the peasant suffered from high rents illegal levies arbitrary eviction जमीरो इच्छा होटे दउतले peasants suffered from high rents illegal levies arbitrary eviction unpaid labor in zamindari area the government levied heavy land revenue and massive losses for indian industries the movement arose when british economy policy resulted in the ruin of traditional handicraft जोटे कहली से मशीन नहीं आसिले मशीन मेकानाइज प्रोडक्शन हला मेकानाइज प्रोडक्शन हला को से माने कंपीट करि पालेनी जो हमर ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट मैन मेड जोटे कि हाथ तयारी जिंस जो करूतले so industry leading to a change in ownership and overburdening of agrarian land and massive debt and impoverishment of the peasantry khatam howak lagla the unfavorable policies the economic policy of british government used to protect the landlords and money lender and exploited the peasant जानिଛ एटा 6 मान 8 गोट मूवी कथा भाबी देबो पूरा एग्जैक्टली सेम peasant rose in the revolt against the injustice of on many occasions रीजन so तीनटा मेजर रीजन कोन ना गोडेला peasant atrocities high rent वगैरह illegal levies वगैरह and massive losses of indian industries जानिଛ कहीं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बर्बाद कर सेतले इंडियन इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट बेस थिला एमाने मशीन आनी की प्रोडक्शन स्टार्ट कले then unfavorable policies british policies
लैंडलॉर्ड और मनी लेंडर को प्रोटेक्ट कले जो माने एक्सप्लोइट करथांती पिजन्स द राइज ऑफ पिजन ऑर्गेनाइजेशंस धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन बढ़िला इटू 1920 to 1940 pigeon organization arose. First organization to be founded was Bihar Provincial Kisan Sabha in 1929 and 1930s All India Kisan Sabha. ये करथिले ऑल इंडिया किसान सभा माने अछि क्वेश्चन आसे नेहरू बोधे सर सर सहजानंद No, सरस्वती no. Yes. ये फाउंडेड करथिले को सहजानंद सरस्वती फाउंडर थिले क्या So that later in 1933 Lucknow session of Congress All India Kisan Sabha was formed with Sajid Lekhaiji as its first president. So it later issued Kisan Manifesto which demanded abolition of Jamindari and occupancy right for all tenants. ଏବେ ବି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ତୁମର ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଡିଫରେନ୍ସ ପିଜନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଫାର୍ମର ଏଜିଟେସନ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜ ହେଇଥିଲା କିଷାନ ଯେଉଁ ପିଜନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମାନେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜଡ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ସେମାନେ କରିପାରୁନଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫର୍ମେସନ ହେଲା ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ବଗେରା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଏବେ ବି ଯେଉଁ ପିଜନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହେଇଥିଲା ସୋ ପିଜନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଇଏ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେୟା ପଚାରିନି କି ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ପିଜନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବଟ୍ ମୁଁ ଓଭରଅଲ୍ ପିଜନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲି ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଦେଉଛି ସବ ତୁମେ ଦେଖିଦେବ କ'ଣ କ'ଣ ପିଜନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଗୋ ରିଭଲ୍ଟ ଜାଣିଛ 1859-60 ନୀଳ ବିଦ୍ରୋହ है ना नील दर्पण किए लिखिଥିଲେ नील दर्पण किए लिखिଥିଲେ दीनबंधु मित्र दीनबंधु मित्र sir. देन रंगपुर दिहांग 1783 रे बेंगल रे फर्स्ट इट इज कॉल्ड फर्स्ट of peasant rebellion against the rule of British India Company. Then Coal Rebellion 1832. Kolu and other tribes basically enjoy independence under of their chief, but the British entry threatened their independence. So एमाने 17th में लड़िया को चले. Then Mopila, Malabar region 1841 to 1920. ये बेसिकली लॉन्ग टाइम एमाने चलते थे. मोपिला मुस्लिम थे मालाबार रीजन रे केरला. ये सब मु दे देबी ये देखि दबो सांथाल रिबेलियन 1855 and it is just before the revolt 1857 then 1875 Deccan uprising जोटा कि permanent settlement basically along with permanent settlement British extended their presence beyond the Bengal so Rayotari settlement was a revenue settlement introduced in Bombay ये सब against basically Deccan रेडी ହେଇଥିଲା Deccan माने तुमर सेठी Rayotari settlement थिला then Munda Ulogan बेसिकली 1899 में मुंडा अपराइजिंग हुआ जाए बिरसा मुंडा है ना रांची रीजन में यहाँ पर बहुत किसी अच्छी एयरपोर्ट वगैरह देन नॉर कलेवेरिया अपराइजिंग जोंटे की लेड बाय टीटू मीर और मीर निठारी अली निठार अली वेस्ट बंगाल रे देन पागलपंथी लेड बाय करम शाह देन फराइजी रिवोल्ट जोंटे की शरियत अल्लाह and his son दादू मिया so ये भलिया सब रिबेल्ट हेतिला सही समय देन तेभागा मूवमेंट 1946 to 47 जोंटे की अनडिवाइडेड बंगाल रे हेतिला देन तेलंगाना मूवमेंट 46 to 52 ये आंध्र प्रदेश अगेंस्ट टोटल अपराइजिंग so these are तुम्हारा बेसिकली पिजन मूवमेंट एवं तारो सही समय हेतिला सी पचारिनी एटा केवल तुमन को जानिया पई रखिदेली सो दैट कोन कोन पिजन मूवमेंट हेतिला गोटे पढि देछि सो इंपैक्ट कोन हेतिला इंपैक्ट कथा पचारछि क्वेश्चन अछि तार इंपैक्ट इंपैक्ट जे देखिबा though these revolt were not aimed at uprooting the British rule from India they created awareness among the Indians the peasant developed a strong awareness of their legal rights and asserted them in and outside the courts. The peasant emerged as the main force
in the agrarian movements, fighting directly for their own demands. The various Kisan Sabha were formed to organize and agitate the peasant demand during the non-cooperation movement. These movements eroded the power of landed classes and thus aiding to the transformation of agrarian structure. The peasant felt need to organize and fight against the exploitation and oppression, and this rebellion movement prepared the ground for the various other uprising across the country. तो ये these are some impact थिला then question आसिला कि present ये सहित यार impact कौन थिला so आ गोटे question ର part ହେଲା जोंटे कि सेही समर peasant movement and present farmer agitation या विषय कौन तुमर impact थिला माने difference कौन question पचाची what do you analyze the difference between any idea सो सेतळे जमीदारी थिला एबे जो लोन सिस्टम रोच ना सर सुधी पारनांती सुसाइड कर दोचंती सेटा गोटे प्रॉब्लम difference ହେଲା कि ସେତେବେଳେ exploitation କିଏ କରୁଥିଲା landlord ଆଉ money lender present exploitation କିଏ କରୁଛି middleman or corporate world and present context ରେ ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ କଣ main policy ବ୍ରିଟିଶ ର main policy ଥିଲା କଣ earn or maximize their profit ଏବେ गवर्नमेंट कौन वेलफेयर गवर्नमेंट बट गवर्नमेंट जो नेक्सस अच्छी बिटवीन कॉर्पोरेट तार इंपैक्ट पड़ुची फार्मर ऊपर से जेमिति फार्म लो आसीथिला बेसिकली कहा को एम्बोल्डन करिया को आस्थिला कॉर्पोरेट वर्ल्ड ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड को दिया होतले कि तंगर मिडिल मैन जो माने कॉर्पोरेट वर्ल्ड जाकी से बेसिकली ताकू सेमान को लॉ रे अलाउ करा होतला सेमान जेकी रेट फिक्स करिवे फार्मर सहित देन धीरे धीरे तांकर मोनोपोली नै जे थाते तो सेही जिंसटा बेसिकली ट्राई करिवो ये करिया पे आंसर करिवो द नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिवा हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर B.R. Ambedkar in the socio-economic development in the country. So Dr. B.R. Ambedkar was an epoch making human liberator, social reformer, progressive politician, scholarly jurist, renowned parliamentarian, great constitution, and very remarkably, he was an eminent welfare economist. कौन न हुए से मनीष सुपर ह्यूमन थिले से he was basically a first trained economist of India जानि जना सही समय सबडु एजुकेटेड मनीष किए थिले एही थिले in 1920 he pursued his research studied in economics from Columbia University USA and London School of Economics known largely as the father of Indian constitution and leader of Dalits Ambedkar began his career as an economist, making important contributions to the major economic debate of the day. So Ambedkar launched full-fledged movement for the Dalit right during 1930s. He demanded public drinking water sources open to all. काई कहलो ये निजे फेस करथिले पिला बेले पानी दोनो थाती खाए पिया पई सांगर सेथि पई देखले कि पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर open to all and right to all castes to enter temples. He openly condemned Hindu scripture, advocating discrimination and arranged symbolic demonstration to enter the Kalaram temple in Nasik. He adopted various means to safeguard Dalit rights. Ambedkar launched a movement against Dalit discrimination by creating public opinion through his writings in several periodicals such as Muknayak, Bahishkrit Bharat, and Equality Janta, which he started for the protection of Dalit right. Ambedkar had been closely involved in the struggle
to give scheduled caste people solid statutory safeguard. He was a delegate at the Round Table Conference in London, and where he asked for separate electorate for Dalit, जोटा कि जानिଛ ଆସିଥିଲା separate electorate 1932 रे. In 1930, Pune Pact signed between Dr. Ambedkar and Pandit Madan Mohan Malviya to ensure reservation of seat for the untouchable class in the provincial legislature within the general electorate. जानिଛ separate electorate କଥା से डिमांड करथिले, बट जेते गांधी फर्स्ट एंड टू डेथ रहिले कोठी यारावाड़ा जेल रे सेठी जाकी चुक्ति हला पुना पैक्ट. गांधी थिले, मदन मोहन मालवीय थिले, बी आर आंबेडकर. से चुक्ति रे हला कोन ना रिजर्वेशन रहिबो जोटा कि एबे भी कंटिन्यू होछ. These classes were later designated as scheduled classes and scheduled tribes. In 1936, Ambedkar founded the Independent Labour Party, which later transformed into a All India Scheduled Caste Federation. He linked nationalism with social and political aspiration of the untouchables. According to Ambedkar, with British imperialism was to India, Hindu imperialism was to untouchabilities. से कहले कि जेमिति ब्रिटिश इंपेरियलिज्म इंडिया पई से बडा हिंदू इंपेरियलिज्म untouchables मान को. He was against the injustice and imperialism in any form and any part of human history. He encouraged the Dalit to embrace Buddhism to liberate their own self from Hindu subjugation. He saw that the movement lacked philosophical justification, so he wrote about the French Revolution ideas of fraternity, liberty, and equality. जोटा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में अछि French Revolution idea. Being the chairman of drafting committee of Indian Constitution, Dr. B.R. Ambedkar provided certain constitutional provision to protect the rights of Dalit in social, economic, educational, employment, political field in the form of positive discrimination or preferential treatment or reservation policies. So Ambedkar effort brought educational awareness among Dalits, who became socially conscious about the circumstances and social problems of untouchability and caste discrimination meted out to them. So Ambedkar launched the social liberation movement for social rights and opportunities of the deprived and downtrodden section of the society. So basically Ambedkar total मु कहि देछि तुमे किछि चाहिले स्किप कर देबा बहुत सारा जिंस मु कहि देछि मन टोटल आंबेडकर जो मेजर काम जहा हेछि आंबेडकर समय रो सोसाइटी पे जहा करजति सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेइथरे मु प्राय सबुडा इंक्लूड कर देछि. The period of 1920 to 1956 was influenced by writings and political activities of Dr. Bhimrao Ambedkar. He argued the case of the untouchability from the boundaries of village to the Round Table Conference of British to Nigeria. Dalit movement in India is a legacy of the multiple streams of Ambedkar's effort to bring equality and to make systemic changes to the social order. ये आंबेडकर ଆସିଥିଲା and ସେଇଭଳି ଆମେ ମନେ ରଖିଛୁ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଫର୍ଟ କେବେ ବି ଇଏ କରିହବନି. Okay. Then evaluate the policy of Lord Curzon and their long-term implication on the national movement. Lord Curzon long-term implication on the national movement. So Lord Curzon has served the Viceroy of India from 1999 to 1905, implemented a number of policies that had long-term implication on the national movement of India. Some of these policy Imperial Cadet Corps 1901, like military training program for Indian student was seen as an attempt to create a loyal and reliable class of Indian officials and administrators, and was opposed by many Indian nationalists.
ये एमिति गोटे कैडेट बनाउथले जोटा कि इंडियन मिलिटरी ट्रेनिंग देखा इंडियन मान आ से माने लॉयल हेगी रहिबे ब्रिटिश सहित मने अछि मूवी देखिछ आरआरआर सेही बळे तार थिला कॉन्सेप्ट The Official Secret Act 1904. This act gave the government sweeping power to suppress the dissent and to punish those who leaked government information. It was seen as an attempt to silence the criticism and to stifle the freedom of press and was opposed by many Indian nationalists. Then the University Act 1904. The act aimed to reform the administration and the curriculum of Indian university and was seen by many as an attempt to impose Western education and values on India. ये देखो Western education को promote करना चाहते हैं. Then Ancient Monument Protection Act 1904. This act gave the government power to acquire and protect ancient monuments and sites. It was viewed as an attempt to control and appropriate Indian cultural heritage को ये control करना चाहते हैं. Then partition of Bengal, this policy aimed to divide the predominantly Muslim eastern region of Bengal from the predominantly Hindu western region and was seen as an attempt to divide the Indian nationalist movement and create the separate Muslim identity. Don't actually successful. So, যদি conclude করিব, the book Lion and Tiger by Dennis Jude and the rise and fall of British Raj in 1916 to 1947, he wrote, Curzon had hoped to bind India permanently to British Raj. Curzon से चाहूला कि इंडिया को ब्रिटिश राज सहित बाइंड कर रखियो permanently. Ironically, his partition of Bengal and the bitter controversy that followed did much to the जोटा कि अलगा हे गला revitalize the Congress को और revitalize करला. Curzon, who addressed Congress in 1900 as tottering to its fall, ultimately left India with Congress more active and effective than at any time in its history. And Curzon gole start hele kono extremist movement, स्वदेशी movement, mass movement या पूर्व किसी ही नथिले. So being an autocrat, Curzon's courses of action had caused a great amount of resentment among the Indians. Yet considered from the point of view of efficiency, enterprises and initiative, he was one of the best Governor General of India. बुझिला ताको क्रिटिसाइज भी कर देला ऑटोक्रेटिक भी कह दिया गला सब किछि कहला बट इनिशिएटिव जहां जहां करछन से अनुसार ताको बहुत सारा इनिशिएटिव ताको समर हेछि वन ऑफ द बेस्ट कहला बुझिला एंड मोस्ट हेटेड वाइसरॉय ताको कह जाय. ओके आउ दीटा क्वेश्चन अछि 8 9 10 दले आजि पई एति है मो लागु जे माने बोर होतो बोर इन द सेंस कि लागु तो कि बहुत जिंस होई जाउ सर बोर किछि नहीं ना सर बोर होउनु आपण जल्दी पढाइबे पढांतु किछि असुविधा नहीं. प्रश्न जानिछु को वेरे लेखा हो सेटा ही जाउछ ना सर इम्प्रूव हमर. हां हां सर बोर किछि जदि नहीं आपणकर काम अछि ताले आपण जाई परिबे किंतु हमरो किछि असुविधा नाही. ना, म अलगा पिला को पचा दउछन काम किछि नाही तुम 10टा मु आजि करेबी आ 10टा काली करेबी तो एनी हाउ आउ 3टा करे देउछि हैं. सर. ओके सो कोको एरिया हमें टच करूछि जानि परछो तो देन नेक्स्ट देखिबा तुमरो discuss in what way trade monopoly of East India Company was weakened by different charter act passed by British Parliament. ये क्वेश्चन रो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर तो तुम्हें पाइबनी को चार्टर एक्ट लिखियो तुम्हें पाइबो सब चार्टर एक्ट लिख देबा ना कोन तो चार्टर एक्ट तो लिखियो सियर बट कोन लिखियो ट्रेड मोनोपोली केमिति वीकेंड हला. So British came to India in 1600 as a trader in the form of East India Company which had the exclusive right of trading in India under the charter granted by the Queen Elizabeth.
After Battle of Buxar in 1764, East India Company got Diwani right also. Janicho, Diwani right and Nijamat right. However, party and parliamentary rivalries, political ambitions of the statesmen and commercial greed of the merchants, and jealousy of other sections of the British society due to the large wealth brought by the company official back to the British. These are the factors led to the gradual transfer of power from company to crown by dilution of trade monopoly of East India Company. ये इंट्रोडक्शन थिला कोन कोन मु कहि जीव এই পয়েন্টটা তুমি বুঝিবা ପାଇଁ ଟିକେ ডিফিକल्ट हो तो कोन कथा ना କାହାର କାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ ର ଆମ୍ବିସନ୍ସ ମାନେ କଣ ପଲିଟିକାଲ ଆମ୍ବିସନ୍ସ ଜିଲସି ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଇନିସିଆଲି ଫେଜେସ ରେ ବେଙ୍ଗଲ କୁ କ୍ୟାପଚର କଲା 1757 ପରେ and then 1764 then 1760 ରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ବାଣ୍ଡିୱାସ ହେଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ କୁ ହରେଇ ଦେଲେ ତ ବ୍ରିଟିଶ ବିକମ୍ ଦ ସୁपर ପାୱାର इन इंडिया इंडिया जो सुपर पावर हैला इंडिया रो रिसोर्सेस सेही भले वर्ल्ड रो रिसोर्सेस रो 30% रिसोर्सेस इंडिया रो थाई से सब और सेही इंडिया रो पाइगला परे ब्रिटिश रो जो कंपनी ऑफिशियल्स बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी ही आस्तिला इंडिया को कंपनी को जो पैसा धन सब मिलिला बोर्ड माने वर्ल्ड रो सबुठ बड़ मर्चेंट्स कोठु जाउथांती इंडिया रो और ब्रिटिश रो खाली इंडिया को जति को ईस्ट इंडिया कंपनी आसनाती आउरी अलगा कंपनी ब्रिटिश रो अछि सी अलगा कंपनी अलग अलग कंट्री को जाई थांती बट ईस्ट इंडिया कंपनी सबुठ पावरफुल थिला किछि ईस्ट इंडिया कंपनी रो जो बड़ बड़ ये माने जाय कि माने ब्रिटिश को चलेवा को स्टार्ट करले पॉलिटिकल पावर नबा को ट्राई करले बहुत सारे तुम्हारे लॉर्ड जोंडे कि कोन फर्स्ट गवर्नर किए थिले क्लाइव लॉर्ड क्लाइव बेसिकली कोन जाय कि से ब्रिटिश रो पार्लियामेंट्री हेइथिले तो सेही भलिया धीरे धीरे एमान को प्रेफरेंस दिया गला पैसा जाबा कर अछि प्रेफरेंस दिया गला देन धीरे धीरे जेलसी बढ़िला जो पॉलिटिकल पावर थिले पॉलिटिकल क्लासेस अदर कंपनी अदर लॉबी याको अगेंस्ट लागि गेले एंड धीरे धीरे ब्रिटिश ट्राई करला कोन ना याको पाखरो पावर टा ट्रांसफर करिया पई पावर ट्रांसफर करिया को हेले से माने रेगुलेशन आनिले रेगुलेशन कोन थिला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कौन पाई आनले केना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया रे थिला सी से समय लॉस रे थिला केना इनिशियल 10-15 इयर्स रे 1757 1760 रे बैटल ऑफ वांडीवास जोटे की थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर then 1764 बैटल ऑफ बक्सर then 1766 तुम्हारा फर्स्ट बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर वॉर ये सब जो बैटल हैला यारी भीतर 3टा 4टा 5टा बैटल रे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस रे पड़ेला करप्शन बहुत ह्यूज थिला ये सब फैक्टर जाकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कोन कहला जाकी लोन मागिला ब्रिटिश गवर्नमेंट को ब्रिटिश कहला ठीक अछि लोन मागियो बट हम हिसाब रे काम करी रेगुलेशन आसला सेहि में रेगुलेटरी एक्ट 1773 आसला देन 1773 आसिला चार्टर्ड सेटा को रेगुलेटरी एक्ट कहदे चार्टर्ड एक्ट 1773 परे रेगुलेशन स्टार्ट हेला देन 1793 रे आहुरी 20 इयर्स पई ताको मोनोपोली दिया गला ईस्ट इंडिया कंपनी को and 1830 कोन गला it ended the trade monopoly with East India Company in India but the company monopoly trade with tea with India and China सहित ये इंटैक्ट रहला so trade in India in all the commodities except tea was thrown open to all British subjects and all British company मान को allow करा गला ट्रेड करिया पे then chartered act 1833 पूरा कंप्लीट ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दिया गला ईस्ट इंडिया कंपनी रो चाइना सहित एज वेल एज टी and all restriction on the European immigration into India was abolished. सब यूरोपियन मध्ये इंडिया को आसिया को अलाउ कर दिया गला यूरोपियन आर अलाउड टू सेटल डाउन एंड ओन प्रॉपर्टी इन इंडिया जोटा कि क्रिश्चियन मिशनरी मन को बेसिकली अलाउ करा गला एडी यूरोपियन को हाउस तो धीरे धीरे तुम देखियो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रो मोनोपोली खत्म करला बाय पासिंग चार्टर्ड एक्ट है ना ये प्रोसेस तो तुम्हें एठी 93 अछि तमे 73 रु कोइ परियो 73 रो फर्स्ट स्टेज जोंडा कि रेगुलेशन स्टार्ट होइतला
then धीरे धीरे 93, 13 and 33 बुझेला नहीं. So after the Battle of Plassey, the company had started using its political control to acquire the monopolistic control over the Indian trade and production. But the problems such as the relation with East India Company and its possession to the government in Britain, ideology of free market theory of Adam Smith, etc., led to the dilution of monopoly of. ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଟା ତୁମେ ଲେଖିପାର ନ ଲେଖିପାର ଆଡମ ସ୍ମିଥ କଥା ଯୋଉଟା କି ଫ୍ରି ମାର୍କେଟ ଥିଓରି एक्चुअली जो ओपन होबार भी मेजर रीजन थिला कोन मु क्लासेस तो कहितली गोटे रीजन थिला सेही समय कोन गोटे हला कॉन्टिनेंटल पॉलिसी ऑफ 1813 रे जो ओपन करा गला एंडेड करा गला मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी गोटे हला कॉन्टिनेंटल सिस्टम ऑफ कहार थिला नेपोलियन है ना कॉन्टिनेंटल सिस्टम थ्रू रे नेपोलियन कोन कला ना ब्रिटिश गुड्स को यूरोप को पसियो देलानी अब ब्रिटिश इंडस्ट्रियल माने इंडस्ट्रियल पर्सन कोन कले गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कले का हमको इंडिया को ओपन करा जो हम इंडिया रे बिजनेस करबा ये गोटे रीजन आउ गोटे रीजन जो आडम स्मिथ रो फ्री मार्केट इकोनॉमी आडम स्मिथ प्रमोट कला कोन जत्ते ओपन करिवो जत्ते मार्केट को खुलिवो सेते बिजनेस भलो चलिवो रेस्ट्रिक्ट करनी खा तो सी ता थ्योरी रे ये चलला देन नेक्स्ट हाउ क्विट इंडिया मूवमेंट highlight the deviation from Gandhiji's ideologies discussed. How Quit India movement highlights the deviation from Gandhiji's ideologies. Gandhiji ideology ru kemti deviation aitla Quit India movement. Quit India movement was known as a August Revolution and was launched after the failure of Cripps mission. Janicho Cripps mission kebe 1942. When it failed to solve the constitutional deadlock, the resolution are framed by Mahatma Gandhi for the British withdrawal and non-violent and non-cooperation movement against any Japanese invasion. So इस समय कौन हितला ना जापान इन्वेड कोरिया को आसीथिला ऑलरेडी इंडिया पाखरे पहुंची हितला. So Congress Working Committee authorized Gandhiji to take charge of the non-violent mass movement. Over the meeting. And it was ratified at the Congress meeting at Gwalior Town, Bombay on August 8 night 1940. So spread a movement, do or die mantra. Gandhiji's famous mantra, we shall either free India or die in the attempt. We shall not alive to see the perpetuation of our slavery. हमें कहले ये गुलामीगिरी हमें आउ करि परिबु ना हमें ताटो मरि जाई बेटा बंचिया कथा नहीं. This led to an arrest of all the top leaders of the Congress on August 9 रो सकाळे आगो ताको जाकी अलगा जगह रे रखि देले. A spontaneous outburst of mass anger. So the arrest of leader led to mass upsurge all over the country for 6 to 7 weeks after the unexpected event of August 9, 1940. Spontaneous outburst of the mass anger ना जो लीडर सब अरेस्ट करने गले मेथड यूज पीपल डिवाइज ए वैरायटी ऑफ वेज. सब कई लीडर नथिले लीडरलेस मूवमेंट से इसमें क्या जाए. In some places huge crowds attack police station, post office, courts, railway station and other symbols of government authorities. National flags को hosted करते on public building in defiance of the British police. Cities, towns, villages witnessed the people's wrath. The greatest level of violence occurred in Bihar and eastern UP. Then parallel government were established in many places. Balia, जोंटे की चिंटू पांडे या चिट्टू पांडे अंडर है. Then Tamluk, Midnapur, West Bengal from December 1942 to September 1944. Jatiya Sarkar undertook the cyclone relief work and sanctioned the grant to school, supplied paddy from the rich to poor, organized Vidyut Mohinis. ये सब काम करते हम लोग. Then Satara 1943 to 1945. Prati Sarkar
was organized under the leader of YB Chavan, Nana Patil. So ये सब हुए थे. So Mahatma Gandhi refused to condemn the violence of the masses and held the government responsible for this. कहले government ही responsible, government ताको suppress करे चाहूँ से इसमें violence हो. So the Quit India movement failed because of heavy-handed suppression by the government. Weak coordination, lack of leadership nothing, and clear-cut program of action. But Quit India movement was a spontaneous participation of masses compared to other Gandhian movement like non-cooperation. ये गांधी जी थिले तांको गाइडेंस रे चलता नॉन कोऑपरेशन हाउस सिविल डिस बट एटी केही नथिला केही नथिले लीडर फर्स्ट सेकंड राउंड ऑफ लीडर समस्त अरेस्ट करने था. Great significance of this history movement was that it placed the demand for the independence on the immediate agenda of the national movement. After Quit India, there could no retreat. ये केबे भी जानी चाहिए ना ये मूवमेंट केबे भी विथड्रॉ करा ही जानी नथिला. Independence was no longer a matter of bargain. एबे आ बार्गेन फार्गेन हमें तो दरकार ही हो. And this became amply clear after the. So these are basically गांधीयन आइडियोलॉजी किसी किसी जो जो इंसिडेंट हेतला हमें सीधा कहबा और गांधी जी वायलेंस क्रिटिसाइज करनथले एवं कंडेम करथे गवर्नमेंट. ओके देन लास्ट क्वेश्चन आज रो बुझिया दो कोन कोन एरिया रे कहीं टच करिवो क्विट इंडिया मूवमेंट रे हाईलाइट करिवो. ठीक है देन डेविएशन केमति कला देन तको देन post independence integration unification of India demonstrated to be a long process plugged with challenges. In this context, examine the early challenges that India faced the newly independent country. देखो इंटीग्रेशन कथा देखिबो यूनिफिकेशन ये सब कथा डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह हेची बट कथा हिच क्वेश्चन हेची अर्ली चैलेंजेस माने इनिशियली फर्स्ट मु जो चैलेंजेस को तीनटा पार्ट रे डिवाइड कर देछि. टोटल ऑफ फर्स्ट फेजेस को 1947 टू 67 ये फेज 1 67 to 77 phase 2 and 77 to 84 phase 3. तो अर्ली फेज माने ई फेज लिखिबो बट मु दी तीनटा फेजेस को चैलेंजेस को लिखि छी काहे आगो को जदी क्वेश्चन किछि भी सेही रिलेटेड आसे तमे लिखि पारिबो. 15th August 1947 marked the end of colonial rule in India and the country found itself standing on the threshold of new era wherein the task was to build a strong nation. While India found itself independent from the British, it was still to find independence from social, economic, political problems that hindered India's growth story. The problem that India faced right after the independence can be divided into three phases. Phase 1, 47 to 67, the problem that India faced after independence. Communal violence, it was already like partition marked the large scale communal violence. Refugee problem, the partition of India gave a way to refugee problem. By mid of 1948, about 5.5 million non-Muslim, around 55 lakhs non-Muslim moved to India, and a very large number of Muslims had left India for Pakistan. Then origin of Kashmir problem, Anachi Kashmir problem, which led to India-Pakistan war. Kashmir was strategically important for both India and as well Pakistan. However, the famous movement led by Sheikh Abdullah wanted integration with India. The Maharaja, on the other hand, feared democracy in India and communalism in Pakistan, thus hoping to stay independent. So initially independent रहा चाहते थे, then तापर जाने कौन हला जाने चाहिए. Then foundation of Indian democracy. First general election in India, which are held in 1952, was a landmark event in the history of the state, which marked the establishment of India democracy for the first time. Then आगु डे problem थे linguistic reorganization. जानी जो कौन? समझ जानी जो language basis रे state हवारो आंध्र प्रदेश. Yes sir. So initially एमाने भी ये करी थिले. So boundaries of the British Indian provinces had been drawn and redrawn in haphazard manner without any thought to cultural and linguistic cohesion.
Most provinces were multilingual, multicultural, and after independence, many former princely states were absorbed into them. So there was a demand for linguistically homogeneous provinces. Then Indus water dispute. The dispute started in 1960 and dispute arose because Indus and its tributary flowed through both India and Pakistan. जोटा कि वर्ल्ड बैंक एटी ब्रोकर करथिला गोटा दीटा वेस्ट फ्लोइंग तीनटा रिवर आ गोटा ईस्ट फ्लोइंग तीनटा रिवर CGI पाकिस्तान रा आरबी स्टोज इंडिया रो हां पाकिस्तान रे चेनाब झेलम एंड इंडस ये तीनटा रहला और रवि ब्यास सतलज रहला इंडिया अंडर रे देन mass poverty at the time of independence the incidence of poverty in India was about 80% poverty thila and about 250 million people under poverty. Famine, hunger pushed India to take external help for food security. जानिचो PL for 80 कथा कहितली. Then illiteracy. When India gained independence, its population numbered about 340 million. 340 million ରୁ 250 million basically poverty ଥିଲେ ଆୟ ପାଉନଥିଲେ. So the literacy level was just around 12% or 41 million. Literacy 12%, presently 74%. Literate only, educated no. Low economic capacity, the stagnant agriculture, poor industrial base. In 1947, agriculture accounted for 50% of India, 54% of Indian GDP. At the time of independence, 60% of India's population depend on agriculture for living. The independence समय रे GDP of 54% contribute करथिले and as well as 60% people depend करथिले. एबे भी 60% ये थिला तुमरो यही challenges थिला early phases है ना, चाहे communal violence, refugee problem और कश्मीर problem, linguistic irregularity, Indus water dispute, mass poverty, literacy, illiteracy, and economic capacity law. Then second phases. Phase 2, 67 to 77, problem India faced after independence. और linguistic reorganization ये continue चलता है. Linguistic reorganization, boundaries of British Indian provinces had been drawn and redrawn. जोटा कि आमे देखिथिले ସେଇଟା still continue चलथिला बहुत सारा जगह एई भलिया ये थिला तो सेम पॉइंट एडी अछि. इलेक्शन 1967 एइथरे सब पार्टी ऑपोजिशन पार्टी आसीथिले टुगेदर आसीथिले मिसथिले अगेंस्ट द कांग्रेस. Naxal movement, the Naxal movement was a revolutionary movement that was started by the Naxalbari in Bengal, which immediately expanded to other regions. Then JP movement. From 1973, there was a sharp recession, growing unemployment, rampant inflation, scarcity of basic food. The oil crisis of mid-70s had also contributed to crisis, and all these developments together led to riots and large-scale unrest and strike and erosion of the support for the Congress from the poor and middle classes. JP movement, emergency and hostile neighbors. The emergency, national emergency, 1975, government response to JP movement is considered as a dark phase of Indian democracy. It curtailed the fundamental rights of the citizen and shook the foundation of Indian democratic credentials. Then hostile neighbors. India had to face consequent wars with Pakistan 65-71, China 62 during the early phase of independence, and this not only hindered India's growth and created a regional instability. So these are second phases, and last phases देखियो 77 to 84 secessionist movement, Punjab ro Khalistan movement, insurgency in the northeast, and Naxal movement in central eastern India 1960s were the biggest internal security challenges to India. Then Punjab crisis, जानिचो in during 80s separatist movement Punjab constituted to greatest threat to the unity and integrity of India. In 1980, Akali Dal under the leadership of Harcharan Singh
Longwal decided to choose path for of confrontation. He installed in the Golden Temple and began the preach of separation movement. Then Operation Blue Star, very important. Tapare Gandhi ro death hela, Indira Gandhi. June 84, Indira Gandhi and her advisor decided to take some drastic action against the militant in Golden Temple. On 3rd June, the Indian Army led by General K.S. Brar surrounded the Golden Temple, and on 5th June, they were entered. Many temple employee and devotee die in the crossfire. These are basically तीनटा phases थिला तुमरो Indian post independence रो challenges रे तो सेटा first phases early phases कोइछ माने first phases रे. So Indian democracy is a heterogeneous model with vast socio-religious and cultural diversity. It was predicted by Western political analysts that Indian model of democracy would not last long. However, it was due to the India's strong commitment to its constitutional principle that led India to not only survive as a nation but also to emerge as the leader of newly independent countries. Okay, so these are basically tomorrow first part तुम देखिले 10 क्वेश्चन आमे देखिदेले 10 टा क्वेश्चन ट्राई करिवो या ऊपर भल से आउ थरे जदि जे लेखिच जहार क्वेश्चन डायरेक्शन हेइनी ठीक से एगडो थोड़े पढ़ी दबो पढ़ी दे कि नीचे लिखिबो पढ़ी दे कि नीचे लिखिबो सर पीडीएफ टा देबे दे देबे